welcome to a very special edition. And today, joining me, a very, very good friend of mine. I mean, someone who I've admired seeing him play and captain and lead his own team. A very, very dear friend, Shoaib Malik. Thank you very much. I mean, been there, done that for years and years in India, Pakistan contests. Yeah, all of us are looking forward to India versus Pakistan in the World Cup. That's a very different match. So before anything else, thank you very much for your time. Really appreciate you joining me. How is it that you will set up India-Pakistan for me, Shoaib? First of all, how are you? It's been, I guess, so long that we are talking today. But it's always pleasure talking to you, meeting you. Of course, India-Pakistan thing is like everyone wants to see. Not just people from Pakistan and India, all over the world. They want to see this particular game. And I guess it brings a lot of things together. And I've seen a lot of Indian cricketers, Pakistani cricketers, they start doing shows and they interact with each other, even people like this. And we have seen abroad, Pakistanis and Indians, they live together, they talk about this particular game. And I guess there's another very, very big game coming up in the World Cup. Absolutely. And you mentioned Indian and Pakistani cricketers and people living together. Even during the Asia Cup, we saw that gesture of Shaheen Afridi presenting something to Jasprit Bumrah and him acknowledging. There is a deep bond between the players, and that is good to see. Because whatever happens inside the field, the competition is fine. But there is a serious bond and respect that the players had for each other. When you played, it was the same. Thoughts about that? Yes, of course. I guess, of course, your responsibility is to give your best shot and win a game for your country. Those things are there. But off the field, we all sit together, we eat together, we laugh together, we even share a lot of jokes. I still remember during 2017 Champions Trophy. So post-match ceremony, Virat was there, Yuvraj was there, and some of Pakistani cricketers. So Virat had asked me what exactly happened between you and Saeed Ajmal when that catch actually landed between us, Chris Gale's catch. It's a very popular story. So we shared a lot of jokes together. So I guess I always say one thing: we eat together, we eat the same food, we speak the same language. So we have so many similarities. So I guess it's a great bonding and a great gesture by Shaheen Shah Afridi. He presented a t-shirt for Bumrah's daughter, and it was a great gesture. And I guess this should be there consistently. And I would even request that both the cricket boards or whoever is involved, that people want to see series happening every year. Pakistan going to India, India coming to Pakistan. And I guess that's what people want to see. Even as a cricketer, as a spectator, I want to see that more often Pakistan, India playing series, bilateral series every year. And I guess it brings, even it makes cricket bigger in the world. No, I mean, we know the political compulsions and that's not happening. And, we sort of know the realities, unfortunate realities of our world there. And that's why, these multinational contests which pit these two sides become so important. Shoaib, ye batao, बहुत साल से मैंने देखा है, Babar used to sort of idolize you in a sense and was this kind of little younger brother, now captaining Pakistan. Tell me about, because you've seen that guy evolve into one of the best players in the world. Babar Azam as batter and captain, Shoaib Malik. I guess a lot of people, they mix his captaincy with his batting. But I guess leadership is totally a different thing. Batting में तो, as we all know, how consistent he is. और हम लोगों ने देखा है कि वो wherever he plays, he scores runs for himself as well as for the team. Or leadership में, I still think he has to learn, because that learning process never ends. But I guess telling him that कि आप captain हो for this amount of period, so फिर उसके लिए भी आसान हो जाएगा कि यार ये मेरे bunch of players हैं, I need to look after them, और मुझे इनसे कैसे काम लेना है. मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल ये देना चाहता हूँ. We have seen
this Nassem Shah, he's injured. He might be out from the World Cup. So अब ऐसी चीजें हैं कि जब उसे आप एक टाइम फ्रेम दे दोगे कि यार इतने टाइम तक आप कैप्टन हो, so he'll start giving or grooming other pacers as well. वरना नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ consistently they have been playing. और ये तीनों ऐसे बॉलर्स हैं, they all produce 140 plus. शाहीन के थोड़ा हम लोगों ने ये देखा that he's coming from an injury, तो उसके बाद से थोड़ा सा पेस उसका ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसमें उसका कसूर नहीं है. It takes time. वो वापस उसी उसमें रिदम में आ जाएगा, सेम पेस में आ जाएगा. बट आई गेस उसको कैप्टनसी का एक जो है एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि आप तब तक कैप्टन हो, ताकि वो दूसरे प्लेयर्स को भी, जहां पे आप, मसला क्या होता है, द मिनट यू लूज अ मैच सो एवरीबडी कम्स ऑन योर हेड. तो उसमें क्या होता है दैट एनी लीडर वुड वांट टू विन ऑल द गेम्स बिकॉज द लीडर डज नॉट नो कि वो आगे कैप्टन होगा या नहीं होगा. सो आई गेस ओवरऑल इफ वी लुक एट हिज कैप्टनसी, ही इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और उसे और टाइम देना चाहिए, एंड ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लीडरशिप डजंट इफेक्ट हिज बैटिंग. दिस इज व्हाई ही इज स्टिल सो कंसिस्टेंट. आपने नसीम शाह का जिक्र किया शोएब. आई मीन नसीम शाह नॉट देयर बीइंग इन द वर्ल्ड कप. ऑब्वियसली ये जो तीनों बॉलर्स के बारे में आपने बोला, शाहीन, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह, this was a very very potent attack for Pakistan. Without Nassem Shah, there is already a lot of talk that Pakistan will perhaps not be the same team. Do you agree with that assessment, or do you think they have the backups in the team and they will still be a very very consistent and a challenger to the World Cup? I guess if we look at Nassem Shah's performances, he's been so consistent, and वो नया बॉल बहुत अच्छा करता है, वो मिडिल ओवर्स भी बहुत अच्छे करता है, डेथ बॉलिंग भी he's been doing exceptionally well. मुझे ये लगता है कि ये हिट जरूर करेगी, और वो इसलिए भी ज्यादा हिट करेगा कि आपने किसी को इतने ज्यादा चांसेस दिए नहीं. आपने चांसेस दिए होते तो कोई आपके ऑलरेडी रेडी होता कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे टू कम एंड do well, especially crunch situations में, because you're going to compete against all the teams to reach in the semis. तो उसमें ये है कि ये हिट जरूर करेगा पाकिस्तान को, but I'm sure a lot depend on Shaheen and Haris Rauf because they have been playing consistently. और मुझे ये लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और क्योंकि उनके साथ अब नसीम शाह नहीं होंगे. लेकिन we do have backups. सिर्फ ये है कि बीच में टाइम नहीं है कि जहां पे they could give those backups some chances from where they gain some confidence to go in a big platform जैसे वर्ल्ड कप है. तो थोड़ा सा हिट जरूर करेगा, बट मेजर मुझे ये लग रहा है कि वो ज्यादा इसलिए भी हिट करेगा, स्पिनर्स नॉट डूइंग वेल, स्पेशली व्हेन इट कम्स डाउन टू बॉलिंग इन द मिडिल ओवर्स. तो वो अगर थोड़े अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे, शादाब हैं, अभी इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जैसे नवाज हैं या उसामा मीर हैं, ये ऐसे बॉलर्स हैं, इनका फॉर्म में वापस आना बहुत जरूरी है, स्पेशली शादाब का, बिकॉज टीम एक्सपेक्ट्स अ लॉट फ्रॉम हिम. और उनका भी वो फॉर्म वापस आ सकता है, ये मेरा मानना है शादाब का, कि अगर वो अपना फोकस बैटिंग से हटा के थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ ज्यादा लेके जाए. मुझे ये लगता है कि उनको बीच में इतना यूज किया गया है कि उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो इतना फ्लक्चुएट किया गया है, उनसे एक्सपेक्ट ये किया गया है कि वो एक जो है ना, जो एज अ मेन बैटर इट सीम्स दैट ही इज प्लेइंग, नहीं, हिज रोल इज टू बोल 10 ओवर्स एंड गेट्स विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स, क्योंकि वो बहुत अच्छा हो जाएगा जब आपका ऊपर से आपको विकेट्स लेके देते हैं आपके बॉलर्स. तो मिडिल ओवर्स में भी जब विकेट्स आएंगे तो वो टारगेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, योर डिफेंडिंग और योर बैटिंग फर्स्ट. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. शोएब, मुझे ये बताइए, एशिया कप में हमने देखा पहला मैच में पाकिस्तान स्टार्टेड वेरी वेल अगेंस्ट इंडिया. शाहीन का वो स्पेल बहुत ही इंप्रेसिव था जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल तीनों को आउट किया. बट सेकंड मैच इंडिया केम बैक, प्लेड वेरी वेल, बीट पाकिस्तान बाय 200 odd runs. वर्ल्ड कप में क्या इन सब का कोई इंपैक्ट होता है क्या? साइकोलॉजिकली विल दिस गिव इंडिया अ बिट ऑफ एन एज? बिकॉज शाहीन अफरीदी अगेंस्ट द इंडियन टॉप ऑर्डर हम लोगों ने दुबई में भी लास्ट ईयर एशिया कप में देखा हुआ है. सो लास्ट नो वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया T20, विराट का वो इनिंग्स, इस बार एशिया कप, क्या इंडिया को स्लाइट एडवांटेज देगा वर्ल्ड कप 14 अक्टूबर के पहले? आई गेस इंडिया पाकिस्तान गेम इज लाइक, इवन कल कोई मैच हुआ हो और जो टीम जीती हो और
देयर इज अनदर गेम फॉलोइंग डे, तो वो इवन हो जाता है मैच। मुझे ऐसा लगता है जितने भी मैंने मैचेस खेले, क्योंकि आपको ऑन द डे यू हैव टू परफॉर्म अगेन। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा एज नहीं होगा, बिल्कुल दोनों इवन होंगे जब मैच खेल रहे होंगे। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर, एडिशनल प्रेशर ज्यादा होगा इंडियन टीम पे, बिकॉज दे विल बी प्लेइंग इन देयर होम। तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर जरूर होगा, बट मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी अ इवन गेम, बिकॉज इट बी अ डिफरेंट टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट होगा। और आई एम श्योर उस टाइम पे किस टीम के ज्यादा प्लेयर्स जो है वो इन फॉर्म है, तो उनको उस चीज का एज होगा। बट एशिया गेम दोनों टीम्स जो है, कभी जैसे पहला मैच हुआ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने बैटिंग नहीं किया, बारिश आ गई थी, तो सेकंड मैच इंडिया आउटप्लेड पाकिस्तान। तो ऑफ कोर्स आई गेस मेरे ख्याल में इवन मैच होगा, इसमें कोई ऐसा वो नहीं होगा कि जी पाकिस्तान को ज्यादा एज है या इंडिया को। ओके, आपने बाबर का कैप्टनसी के बारे में कहा, आपने रोहित शर्मा के साथ आप खेले हुए हो, रोहित शर्मा का कैप्टनसी आपने क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है, आपको कैसा लगता है? रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए ये वर्ल्ड कप, हम लोगों ने 10 साल आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है इन इंडिया। 2017 में हम लोग पाकिस्तान से, आप लोगों से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हार गए थे, एक 2-3 बार क्लोज आए हैं, 2019 वर्ल्ड कप फॉर एग्जांपल। सो दिस टूर्नामेंट फॉर रोहित एंड राहुल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है, हाउ डू यू सी रोहित शर्मा एज कैप्टन? Rohit Sharma, as a captain, I've seen a lot of emotions on the field from him. I guess he set a lot of high expectations from his leadership. ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लीडर को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये टूर्नामेंट जीतना ही जीतना है। No, there's a long process to get deep in the tournament and then think of winning the trophy. तो मुझे ये लगता है कि उनको कैप्टनसी को इतना अपने पे हावी नहीं करना चाहिए, because so I guess he opens the batting, and we all know the day he bats, कोई बॉलर उनको नहीं रोक सकता। मैंने ये देखा है और उनमें ये क्वालिटी है। So leadership should not affect his captaincy, his batting, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ना कभी उन प्रेशर में उनका फेस नजर आता है। But when he was playing as a player, I've never seen him under pressure while he's batting. तो वो थोड़ा सा मुझे लीडरशिप का उन पे प्रेशर जो है वो फेस एक्सप्रेशन से नजर आता है। इट शुड नॉट अफेक्ट हिज बैटिंग, क्योंकि बैटिंग जब वो करेंगे, जितना मर्जी टोटल लगा हुआ हो या पहले बैटिंग कर रहे हैं, द डे ही बैट्स वो साइड पे कर देते हैं गेम को। तो आई गेस इम्पोर्टेंट जरूर है उनके लिए, राहुल द्रविड़ के लिए, बट don't think about winning the World Cup. Just think about there's a process. Stick to the process and make like good plans and give confidence to your players, क्योंकि it's going to be a massive World Cup. बहुत लंबा World Cup है जिसमें आप ups and downs भी आएंगे, but वो जब down time आएगा आप पे, how you deal with that, especially how as a leader you're giving confidence to your players, how you're giving confidence to your player as a coach. तो क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि आपका लीडर जो है वो घबराया हुआ तो नहीं है। जब लीडर नहीं आपका घबराता, यू कैन अचीव एनीथिंग। और देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स फॉर मोस्ट ऑफ द टीम्स, लेकिन जो प्रेशर के साथ अच्छा डील करेगा, दैट पर्टिकुलर टीम विल हैव अ बेटर चांस गोइंग डीप इन द टूर्नामेंट एंड विनिंग द ट्रॉफी। तो 2 सवाल। पहला सवाल, आपने प्रेशर का जिक्र किया। इंडिया पाकिस्तान मैच, हर कोई बोलता है, प्लेयर से आप पूछोगे तो वो बोलेगा नो नो वी प्ले इट लाइक अनदर मैच। वो तो अनदर मैच होता नहीं है, अलग मैच होता है। सो उसके बारे में, हाउ डिड यू डील विद दिस प्रेशर एंड टॉक टू मी अबाउट इंडिया पाकिस्तान प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैज टू बी, how do you look at Virat Kohli? Because even in Asia Cup he was brilliant. Last World Cup in Australia, that innings was perhaps one of the greatest cricket innings ever. So India Pakistan pressure and Virat Kohli. आई गेस इंडिया पाकिस्तान गेम, कोई भी अगर बोले कि प्रेशर नहीं होता, ऑफ कोर्स प्रेशर होता है। बट व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेनेवर आई हैड अ गेम अगेंस्ट इंडिया, मैं बिल्कुल ऑफ रहता था। मतलब मैं सुनता नहीं था, मैं टीवी देखता था, हाँ मैं मूवीज देखता था, म्यूजिक सुनता था। इवन आई यूज्ड टू स्पीक टू पीपल जो क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहते थे। तो मैं इस तरह, दैट्स हाउ यू डील विद प्रेशर। ये मुझे वो चीज, बट कुछ लोगों को, आई एम श्योर एवरीवन इज डिफरेंट, तो कुछ लोग जो ये है वो चाहते हैं कि यार आई शुड सी व्हाट्स गोइंग ऑन,
there's a big game tomorrow or coming up. तो वो different हर इंसान का वो है. But make sure, however you can deal better with pressure, do that. तो ऐसा नहीं होता कि प्रेशर नहीं होता. Yes, having said that, जो पुराने लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि सीनियर्स हैं, उन पे ज्यादा प्रेशर होता है बिकॉज हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं. उन्होंने दे हैव वन गेम्स, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं. इसीलिए आप देखें रिसेंटली इफ वी जस्ट टेक आउट विराट, हमें दोनों टीम्स में से नए लोग परफॉर्मेंस करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं. तो उनके पास ज्यादा चांस होता है मेरे ख्याल में, जो न्यू कमर्स हैं, बिकॉज दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू डोंट डू वेल आफ्टर द गेम. तो उनके पास ज्यादा चांसेस होते हैं. सो ये है कि प्रेशर जरूर होता है. दूसरी बात, विराट, मैं एक ही छोटी सी बात बोलूंगा अबाउट विराट. विराट, ही इज लाइक अ 4-wheel कार. आप उसे किसी भी सिचुएशन में डालो, किसी भी हर्डल से गुजारो, he's there and he's the man and he's done that so many times. I guess words are not enough to praise what he's done or he's doing. But I would love when he comes to bat, and I guess when he comes to bat, it's such a treat to watch how he plays and takes the game down regardless of the situation. So I guess it's blessings that we have a player like Virat Kohli who we could see and talk about him. And if I say India versus Pakistan, I mean, take that last World Cup, for example, under pressure to be able to deliver like the way he did was incredible. I mean, if I ask you as a former captain, as somebody who's a legend of the game, to try and analyze Virat's mind, what do you think stands out for him? I guess his self-belief is on the next level. I'm sure he also goes through a lot of pressure, but his self-belief, and he knows his game, and he stick to that. He always takes, if he's playing an ODI, he takes his 10-15 balls, gets used to of the conditions, and then he plays accordingly, regardless of the situation. So I guess after he played those games, then he takes his game to a next level, and the best part he has, that he knows how to finish the game. That is very, very important. And he comes and bats at number 3, the most important number in any format, number 3. And I guess when you have a player like him in your team, then it's very rare that as a team you could go wrong. And he's like so fit. Yeah. And I guess, and because he knows that he has to run as well, so he's making sure that he trains hard, stays fit, and everything is going in his favor. And his main goal is cricket. So your main goal as an athlete has to be your profession. Fascinating. Last few questions, Shoaib, before I let you go. One, Jasprit Bumrah's return has been huge for India. We saw him at the Asia Cup. We saw him in Ireland. He's looking good. How important do you think, I mean, a lot of people on my show, somebody like an Ian Bishop or a Curtly Ambrose or former fast bowlers have said, Jasprit's addition to this Indian team has made a huge difference. Your thoughts? Of course, he's an exceptional bowler, and he's done really well for India. He's doing great for India. But I guess during the World Cup, Indian team should use him like carefully. If they're playing against big teams, then yes, put him in the side. But if they're not playing against big teams, then they should rest him. So he's always fresh. And because, the minute his pace comes down, then he would be struggling. So India should make sure that put him against big teams. Very, very interesting thought, that one. Would you want to pick your 4? Your top 4 at this point in time? I know it's very difficult, but would you say India has a major chance on home soil? Home advantage will give India that edge. Am I right in saying that? Of course, because Indian crowd is a massive thing, and I guess it'll be a great support for Indian team. Having said that, there'll be a lot of pressure, there'll be a lot of talks, but I guess don't listen to that. But of course, I would see Indian team in the last 4. And if you want to ask me that who would be last 4, then it's a very tough call. But I do want to see India and Pakistan in the last 4.
Pakistan, you reckon, even without Nassem Shah, has the ability, because they've been dented, and you still think Pakistan has the ability to make the last four? There's a lot of talk. Yes, I still think they'll because I've seen Pakistan cricket team. They always do well in big events, and I really have high hopes. But yeah, small advice is that, or small suggestion, they have to play another batter in their side. They are only relying a lot on three batters. One is Imam, Babar, and Rizwan. They need more batters. I still think Salman Ali Agha, instead of him, they should bring a proper batter in their side. Fascinating. Interesting, Shoaib Malik. Always a pleasure to talk to you. Always a pleasure to talk to you. I mean, we look forward to physically chatting as soon as possible, maybe getting you to India and talking to me in person for Revsportz. But as I said, always a privilege and a pleasure in speaking to you. Thank you very, very much for your time. Appreciate you joining me, and look forward to a fascinating India-Pakistan encounter in the World Cup. Definitely, and I'll see you soon. Thank you very so much. Thanks a lot. Take care. Thank you. Bye. Take care. Bye-bye.